हेलो एवरीवन, आई एम सुरैना और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट वेदर। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं वेदर को जर्मन में क्या कहा जाता है। तो वेदर को कहते हैं दास वेटर। दास वेटर, द वेदर। ओके, so let's start with it is cold, es ist kalt, it is hot, es ist heiß, it is windy, es ist windisch, it is sunny, es ist sonnig, it is humid, es ist feucht, it is foggy, es ist neblig, it is cloudy, es ist bewölkt. But, which is called as aber, when we talk about it is raining and it is snowing, these words are different. It is raining, es regnet. It is snowing, es schneit. Now, why they are different? Because all the above adjectives like cold, hot, windy, sunny, these are all adjectives. But here, raining and snowing are considered as verbs. That's why we conjugate them and that's why they are different. So see you in the next video. Till then, bye.